Constitution is silent about period of disqualification. Which constitution? Next point पे चले ना. You are repeating yourself now. So your second A argument, lot of people to be heard. My lord, second Let us not argument speed it is up, that please. only constitutional amendment would have done this. my lord, Tikko, that is my आगे submission, चलो. only constitutional We understood amendment. And I support this argument with this thing as well. In Article 62, they have given various period of disqualification, 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Sorry, repeat yourself. ये आपने repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. No, I can just pose you a question. If in Samiullah Baloch, I'm writing now the judgment of Samiullah Baloch, imagine it, and I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch, correct? For no logical reasoning, it is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say, I would be wrong in saying 2 years, because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly, so it's all up to do with my mind. But it's Nothing to do with the written- Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस If बात it's को. silent, that means Understood your point. until it's in field. चलिए अगला पॉइंट या फिर हम किसी और से पूछें. This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. Let's Reinterpret. Election Amendment Act 2023. Now my submission is if we are in 187, then I can object on the vires of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vires of the Election Act. आप तो वैसे चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged varies of 232. That's not the question. It's not the question. Varies of 232 is not. Nobody has challenged the varies in the High Court or in this court. My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has petition. not been decided yet. That is the thing. हमारे सामने नहीं है. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 194(3) petition. So my understanding, the way I read Your the understanding should be found. The answer is in the order, the first order that we passed. My lord. Since election are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly we want clarity. One way or the other, the returning officer is not a competent lawyer as yourself, it's maybe a bureaucrat. So give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27, order 27A to all the Advocate General and Attorney General. The word to the whole of Pakistan we should notice. You might as well decide upon the vires of this thing. नहीं वो भी कर लेंगे. आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. That is my submission. कह रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मैं कहता हूँ इस unconstitutional. I rely on Bas Mohammed judgment. एक बात बताएं देखिए आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62(1)(f) में कुछ बताया नहीं. उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है
या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं। Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, they They have framed have it. framed the law, They had to interpret the constitutional provision, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा wisdom था। They had to आपको frame क्या it under 239, 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012 ALD, those are 2012 Supreme Court 923. and what paragraph are you relying for the Para 50. for declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want, sometimes tough questions help us resolve my lord. our own difficulties we are having in understanding things. My lord. Thank you. very much for giving patience. Nani, thank you very much. Who will next? Amicus को हम पूछ लें या आपका? नहीं आपकी कैटेगरी में जो आप आ पोस्ट जाइए, कर रहे उस्मान साहब आ हैं जाइए, और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड, ही सीनियर, विल आस्क हिम फर्स्ट। सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें। My lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया। जी sir. जी, I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए, इधर माइक। हाँ, While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Mohammad Kashif, that is, my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake decree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored. Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब, जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं। हम इंडिविजुअल केसेस 5 ईयर बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन। तो हम आपके इंडिविजुअल केस, आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों वो फिर अलहदा सुनेंगे जी। तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं। मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ जी। एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी, कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. एफ था ही नहीं ओरिजिनल में। कर रहे हैं ना support 18th amendment से पहले They could do so, amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out, that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments, and they. ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। और फिर वो my lord जो आया है 62 में अमेंडमेंट की है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल। दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है, दैट इज जजमेंट लॉ। समी साहब के केस में जजमेंट लॉ,
और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं। आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी उसको उसके पेपर रिजेक्ट किए हैं ना जी उन्होंने। लाइफ टाइम? जी नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो नहीं, तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? नहीं, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ। तो आई एम कंफ्यूज, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट वो तो मैंने सर अर्ज कर दिया, Disqualify जो हो। अल्लाह दीनू केस है और जो केस है उसका सरदार आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक। क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये है जी मेरी। चलिए। और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, नहीं होनी चाहिए। Thank you very much. एक बात आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आप कहते हैं डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं। My lord, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? my lord, partly